Hi guys, I'm Dr. Nirmal. Welcome to my channel Doc Talk. Hi guys, so today's topic of discussion is what should be the sequence that you should follow for preparing NEET PG exam. Okay, what should be the sequence to follow to preparing for NEET PG exam. Now this is a sequence of sets. Okay, कुछ subjects हमारे 19 subjects हैं, तो मैंने उनके रिलेटिवली ईजियर और इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो आपस में उनके हिसाब से उनको बांटा है. तो मेरे कुछ 4 सेट हैं और मैंने भी इसी तरह प्रिपेयर करा था during my preparation. So we have 4 sets, set 1, 2, 3 and 4. Set 2, okay, so the very first set we will conclude physiology, pathology, medicine, pediatrics and biochemistry. Now all these subjects have one thing common, that they all are medical subjects. We call them MD subjects. Okay, they all are medical subjects. Okay, now why to start with physiology? Now physiology is everything normal in life, normal in body. Okay, first you should know normal, then you should know abnormal. So that's why physiology to be read first, then start with abnormal. Pathology to be read second. Now you know normal, you know abnormal, now you should know how to treat the abnormal, then start with the medicine. If you know a good knowledge of physiology and pathology, medicine will be very easier. Then now you know the medicine. Now let's go to the child medicine, that is pediatrics. So start with pediatrics, and at the end I have added biochemistry, and the very good reason for adding biochemistry is because of the common topics between pediatrics and biochemistry. So biochemistry, as though, is a very volatile subject. You will read it and in a week you will be like, okay, I don't know anything about biochemistry. So you have to repeatedly read it, and we will come to that in another video, how to read volatile subjects. Okay, but right now the set 1 constitute physiology to know the normal, then pathology to know the abnormal, then medicine to treat the abnormal, and pediatrics to treat the abnormal in the children's, and biochemistry for the inborn error of metabolism that is common between pediatrics and biochemistry. Now let's come to the second set, which is this one. Now the second set is all or mostly about the drugs or the miscellaneous subjects. Okay, now what is miscellaneous subjects? These are those subjects which are very far related to other subjects. Okay, or they are like related to all the subjects or very far to any of the subjects. So these are the miscellaneous subjects. Or the other part is the drugs part. Now we will have to start with pharmacology. Now why? Because we have done set 1, which is all about the medicine and the abnormal and the treatments. Now if we start with pharmacology, we will be very familiar with the drugs that will be used, okay, that we have read just in the medicine and the pediatrics part. So start with the pharmacology, then go to the anesthesia. Now why anesthesia? Because pharmacology is all about drugs, and there is some part of pharmacology which is concluding the anesthesia. Like we all know that anesthesia is also seen in pharmacology because of the drug part. Now if we read anesthesia after pharmacology, it will be a very good thing to read. Then comes the psychiatry. Now why psychiatry? Because psychiatry though have very different kind of a sub syllabus, but there is some drugs like antipsychotics or neuroleptics, as well as bipolar disease drugs. Okay, and psychotics may be typical and atypical are 2 types. Okay, and a lot of things that we should know. Okay, so उसको explain करने के लिए, psychiatric drugs को explain करने के लिए, we should have a little knowledge about pharmacology. Okay, especially the CNS drugs. Okay, because psychiatry is basically the brain thing. So we should know pharmacology, then anesthesia, and then psychiatry, and it won't take much time. In 4 days you will be completed with all these 3 subjects. Okay, then comes the radiology. Now radiology is such a subject, if we leave its general radiology, the systemic radiology is included in all of these. Like if you go to medicine or pathology, all the systems have different radiological images which is concluded in radiology. Then if we go to the surgery, the GIT part or the abdominal part basically is seen in radiology. And then if you go to orthopedics, all the x-rays, MRI, CT scans of the joints is seen in the radiology. So basically radiology is included in all the subjects, okay, with the major subjects basically. So it's a miscellaneous. That's why in the set 2 it doesn't have any relation with the pharmacology part, but it's in the set 2 because you have to do it.
देन कम्स द आई ना, आई का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था किसी के साथ, सो मैंने इसको सेट 2 में ही रखा है, अपने लिए भी रखा था, आपके लिए भी यही सही रहेगा, ठीक है। दीज आर ऑल द एडवाइजेज, ओके। आप अपने हिसाब से इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने सेट बदल सकते हैं, बट आपके पास एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि आपने इसको क्यों चेंज करा, ओके। ये सब आप पर है क्योंकि प्रिपरेशन आपकी है। सो देन कम्स द सेट 3। नाउ सेट 3 में सबसे पहले हम शुरू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी ऊपर किसी सेट के साथ जुड़ नहीं रही थी, तो उसको यहीं यूज करना पड़ा। एंड द वेरी गुड थिंग इज, अगर आप माइक्रोबायो करोगे तो यू विल नो ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी इट वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ओके, और द पैरासाइटिक, ओके, ये कोई भी हो तो आपको उनकी नॉलेज होगी। देन कम्स द डर्मा। नाउ वाई डर्मा? बिकॉज ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गोइंग टू कॉज समथिंग on the skin, we call it like skin lesions, and then if we do derma after, just after micro, it will be very beneficial for us. This is okay. Then comes the obs and gyne. Now why obs and gyne? Because some part of derma and micro is also seen in obs and gyne, the infection part, the PID part, okay, and the abortions due to infections. Then in obs gyne few things are there which is also seen in PSM, like the maternal and child health care. So go for PSM after obs and gyne. Then go for FMT. Now FMT is also one of a miscellaneous subject, but I prefer to put it in the set 3 with all these subjects like micro, derma, obs, gyne, PSM and FMT. Okay, so this is my set 3. Then comes the set 4. Now what is set 4? Set 4 is basically the surgical items, like we start with anatomy. Now if we know the anatomy of the body, then only we can perform the surgeries, as every surgeon should be very handy with the anatomy of the body, okay. If we know the anatomy, we know the muscles, bones, joints, all the fascias, all the arteries, nerves and vessels, okay. Then we should know the orthopedics. Now why orthopedics? If we have just read anatomy, which is constituting the bones, joints, everything, we should know the orthopedic. It will be easier to know the orthopedics of that, because we already know the joints, we know which bones will be there, okay, and how the joints work in the anatomy, and if there will be something abnormal, that is of course in the orthopedics we will know. So anatomy is basically the normal of body of the bones and the joints, and orthopedics is the abnormal of the same. Now then comes the surgery. Now why surgery? Because after anatomy, in anatomy we will learn abdomen, right, and all the abdominal viscera and how the peritoneum is attached to all of them. Then we have to do surgeries on them because of some pathologies in the abdomen. So we should know anatomy first, then of course that is anatomy is normal, then orthopedics is abnormal of the bones, and surgery is abnormal of the visceras, okay. So we know that. Then comes the ENT. Now ENT is also excluded from this one, but as we can say that ENT is more of a surgical thing, and it constitutes the head and neck part, okay, the ears, the neck and the larynx, pharynx, larynx and ear. So basically we know it in the anatomy again. So basically the anatomy is the mother of this set. If we know the anatomy better, then ortho, surgery and ENT will be very easier for us. Similarly in set 3, microbiology is the mother. If we know microbiology, we will know dermatology, obs-gyne and PSM very easily. And in set 2, the pharma is the mother, and in set 1 the pathology is the mother, not the medicine, okay. If you know the pathology very I say nicely, then only the medicine and pediatrics will be easier for you, and physiology will be easier for you. So these are few sets that I have made. मैंने अपने लिए भी बनाए थे and आपके लिए भी बना रहा हूँ, okay. So physiology, pathology, medicine, pediatrics and biochemistry in set 1, pharmacology, anesthesia, psychiatry, radiology and eye in set 2, microbiology, dermatology, obs-gyne, PSM and FMT in set 3, and anatomy, orthopedics, surgery and ENT in set 4. Now can you jumble this set like set 1 after set 3 or set 4? I suggest don't do that, okay. Start with this set 1, then go to set 2, 3 and 4, okay. But if you have some logic for jumbling up, or you have some sequence, or you have planned things accordingly, you can go with that. But for me, if I'm suggesting someone to jumble up set, I will say a clear no, don't do that. Go with the flow. And of those students like who are thinking of skipping some subjects, okay, I have something for you guys. Never leave any subject, okay. Because पहले क्या होता था कि 300 क्वेश्चन आते थे, तो यू नो कि आई में से 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑर्थो में से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, साइकियाट्री में से 2-3 आ जाएंगे, डर्मा से 4-5 आ जाएंगे,
तो ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग नहीं होते थे। अब क्या हो गया है कि यू नेवर नो कि डर्मा का क्वेश्चन वो मेडिसिन में पूछ लेंगे, डर्मा का बैकग्राउंड दे के मेडिसिन का क्वेश्चन पूछ लेंगे, कई बार मेडिसिन का बैकग्राउंड दे के आई का क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर INT का बैकग्राउंड दे के एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछ लेंगे। यू नेवर नो इफ अगर आप तुम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते हो, इट विल बी लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विद 7 प्लेयर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। और ये सब जानते हैं कि अगर एक तो बॉलर होगा, एक तो कीपर हो जाएगा, तो 5 प्लेयर फील्डिंग करेंगे, और इतना बड़ा ग्राउंड है, तो यू कैन ईजिली फाइंड द गैप्स। ओके, एंड राइट नाउ NB इज प्लेइंग विद अस। ओके, तो उनको तो अच्छे से आता है गैप्स ढूंढना, तो वो तो ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ मिलकर बन रहे हैं। ओके, दे विल स्टार्ट विद एनाटॉमी, दे विल कम टू फार्माकोलॉजी एंड दे विल आस्क अ ड्रग ऑफ एनेस्थीसिया। ओके, सो ऐसा नहीं होगा, दे विल कम टू ऑब्सगाइनी एंड दे विल गिव यू केस ऑफ ऑब्सगाइनी एंड दे विल आस्क क्वेश्चन ऑफ पेडियाट्रिक्स। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो कि मैं शॉर्ट सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, साइकेट्री वगैरह छोड़ देता हूँ एंड मेरे से हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा, किस्मत अच्छी होगी तो शायद आ जाए, बट इट विल बी वेरी वेरी हाई रिस्क टेकिंग थिंग। ठीक है, और आपके पास टाइम है, आराम से पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ने पड़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप रैपिड रिवीजन से पढ़ लीजिए। नोट्स नहीं लेने हैं तो टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, वो ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स से ले लीजिए, या जहाँ से आपको अवेल हो जाते हैं वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअली नोट्स मिलते ही नहीं है रैपिड रिवीजन के, जो कि एक गलत चीज़ है, मिलने चाहिए। बट बेसिकली किसी सब्जेक्ट को छोड़ने से अच्छा है उसको रीड करो, उस पर इतना स्ट्रेस मत दो चाहे, पर उसको कुछ तो याद करके जाओ, ताकि एग्जाम में तुक्के ना मारने पड़े, क्योंकि जैसा एग्जाम है 200 क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जो क्राउडिंग है वो बहुत जल्दी हो रही है आजकल। जो पहला एग्जाम हुआ था, हमने दिया था जो 200 क्वेश्चंस का, उसके कट ऑफ्स देखोगे आप तो अगले साल तो उससे भी ऊपर जा रहे हैं। लाइक नीट UG में तो आपने देख ही लिया कि लाइक 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चों के आ गए हैं, एंड अराउंड 20-30 बच्चे तो 700 से ऊपर लेके बैठे हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न होने वाला है कल को नीट PG का भी बहुत जल्दी, एंड सीट्स तो बढ़ नहीं रही हैं, तो देख लो। सब्जेक्ट्स छोड़ना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल बी लाइक प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विद 7 प्लेयर्स ऑन ग्राउंड, एंड दोज हु नो कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है उनको पता होगा कि 7 लोगों के साथ क्रिकेट खेलना हार के बराबर ही है। ठीक है, तो अगर आप लकी रहे तो शायद उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आई डोंट प्रेफर कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओ। जो सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, पहली बात तो छोड़ो ही मत। ठीक है, छोड़ दो, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, सब करके जाना है। ठीक है, चाहे थोड़ा करके जाओ पर सब करके जाना है। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल। ये आपकी सीक्वेंस का अगर आप देखना चाहो तो पीछे जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। आई गेस दैट्स ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर निर्मल एंड दिस इज़ माय चैनल डॉक्टर। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एंड कमेंट भी कर सकते हैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे। आई गेस दैट्स ऑल, थैंक यू।